Hello learners, once again welcome back to my channel that is Eco Classes. These are the sessions only meant for economic subject, and if you are at the school level, college level, undergraduate, postgraduate courses, or if you are preparing for NET examination, JRF, SLET examination, CTET, HTAT, TET, TAT, or any competitive examination in which you will have economic subject, then this particular channel is definitely going to help you a lot. So if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel so that time to time आपको notifications भी मिलती रहे जब भी मैं आपके लिए नए videos लेके आऊँ. Today we are going to study topic first, that is concept of cost. So what is cost or what do we mean by cost? Basic concepts of cost that we need to study before digging into detailed study of economic subject or several important topics under economic subject. So let's just start with the basic one, that is concept of cost. This is the entirely microeconomic series that I have brought it for you, and it will help you a lot for your examinations preparation and also for clearing out your academic level. So this is only meant for you, and it focuses upon microeconomic subject, that is a branch of economics, microeconomics. So that's why I have given name microeconomic series. This is the part one. Overall, in two parts, the entire concept or topic gets comprised of or gets over. So this is the part one, and it talks about concept of cost. So which are certain types of cost that we have to study under economics that we are going to study today. Now, microeconomics study, a series. Here, you can see on the screen what certain topics that you will be studying under microeconomics series. You could see over here cost and revenue analysis, in that the basic cost concept, then short run and long run cost concept, distinctions, your difference and relationship between different cost curves and the analysis, what is U-shaped curve? What is L-shaped curve of average cost curves in relation to average cost? Then we'll have to study revenue analysis or the topic revenue. In that, the concept of revenue, we'll have to study relation between average revenue and marginal revenue curve, equilibrium analysis, total cost, total revenue approach, and so forth. Slowly and steadily, we will cover each and every topic in detail and clear form. But let's just start with today's session with the topic concept of cost. ठीक है? So सबसे पहले ये जो topic है वो हम cover करेंगे. So today we are going to study topic number one, and this is the part one series. So today we are going to study concept of cost. Without further ado, let's just start with today's session. Concept of cost and its types. Now, when we are talking about cost, what do we mean by cost? The basic thing that we have to study under cost is expenses, yeah, expenditure that an individual or a consumer or general public or even the entities or enterprise or corporates that have to incur in order to get the services in return or the products in return. So basically, whatever expenditure that we incur can be simply termed as cost. Okay? Now there are several types of cost that we have to study. Number one is, you can see on the screen, explicit cost. What does the word explicit means? Explicit cost refers to those costs which involve direct monetary payment by the company or firm for the use of productive factors owned by others. This cost, yeah, explicit costs are clearly recorded in the books of accounts and are also known as out-of-pocket cost. In a simpler way, if we have to define the term explicit cost, then my dear, my friend, the simpler way is this, that when we are paying money and we are recording the transaction in the books of account, if you are running any firm or even as a simple individual, then that transaction in which you have mentioned the amount of money that's been transacted, then dear, that is called as the explicit expenditure, yeah, explicit cost. So in simpler way, we can say whatever expenses we have done in monetary terms, then that is considered under explicit cost. Understood this much? And is also called as out of pocket cost. Why is it called as out of pocket?
because ultimately it is going out of our pocket. It is reducing our budget, right? Whenever a firm hires labor, rents a building, purchases new raw materials, or pays for electricity bill, it incurs explicit cost. Understood? Few of the examples I have given it for you so that you can understand. Whenever if we say for example, you are running a company or a small firm, right? And you have hired some of the laborer over there, your workers. अब महीना complete हो गया है. You will have to either pay them salary or you will have to pay them wages. अगर laborers है, then every single day you will have to pay them wages. So the wages that has gone out of your pocket, the expenditure that you as a company owner has made, that is explicit cost, right? For hiring the labor, you will have to pay something. If you are renting if you have to pay the rent of a building, if you have taken the building on rent, you are not owning the building, you'll have to pay up the rent. Then the expense that you have incurred as a rent on that aspect, the rent will be considered as explicit cost for the company that you are running upon that particular space. If you have purchased new raw materials for production activity, manufacturing activity, then the expenditure behind purchase will be explicit cost. If you'll have to pay electricity charges, the cost behind it is explicit cost. So I hope it is clear to you. Now, if anyone will be asking you what is explicit cost, then on the spot you will be in a position to answer that whatever cost has been incurred out of the pocket for continuing the manufacturing activity in monetary terms, then we can say that transaction in monetary terms we can say is explicit cost. Okay. These costs are unavoidable for production and directly affect the firm's cash flow and accounting profit. So true it is written. Such kind of costs, what happens to you? It is these are the costs which are unavoidable. आप avoid नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते? भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्क करना है. You want to run up the company. You want to have the manufacturing product. Otherwise, how will the production actually will happen? So for doing the manufacturing, you will need raw materials. You will need laborers. You will need space. And for each and everything or factor of production, you will have to pay something. So dear, those all expenditure will be considered under explicit cost, and these are certain expenses which you cannot avoid. Understood? Explicit costs are a part of accounting costs, which means accounting cost is equal to explicit cost. Why is it written accounting cost? The only factor behind this term is because all these transactions you are going to mention in the books of accounts that's been maintained by you. Okay? So that is why such types of costs are called as accounting cost, and its another name is explicit cost. I hope it is understood by you so we can move further. Now, explicit cost. Why is it needed? What does it help, or what sort of help it lends to the company, to the firm? You can see over here. What is the importance of it? Then explicit cost or the transactions that you are recording in accounting books. It has importance in decision making. Why decision making? If more of the expenditure you have done, then it will help you to determine that next time you will have to incur less expenses and you will have to cope up with that expenses by having more revenues, right? So in decision making, it is useful. In controlling your budget, it is useful. In calculating short run profit, short run, you must be knowing 1 year or less than 1 year period. So during that, whatever estimated profit you have actually determined by yourself as a company owner, as an individual, you will have to focus upon that. So in calculating that also, this is important. In preparing financial statements, explicit cost is important. In deciding product pricing, if, say, for example, you are making chopstick. Now, the price of chopstick box is 10 rupees. Okay, you are making chopstick, and the price of one box, say, for example, is 10 rupees. Now, the cost incurred behind this one box by you, जो भी आपने खर्चा किया है, रॉ मटेरियल्स लाए, लेबरर्स को हायर किया
या जो भी खर्चा आपका आया है, ये एक बॉक्स बनाने के, एक बॉक्स मतलब अंदर जो भी यूनिट जितनी भी है, वो सबको बनाने के पीछे समझो 5 रुपए। तो दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन ये 5 रुपए जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और ऊपर आपने वैल्यू ऐड की है दूसरे 5 रुपए, यानी कि ये प्रॉफिट मार्जिन जो आपने सेट किया है, दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेगा या हेल्प करेगा आपको डिटरमाइन करने की प्रॉफिट कितना रखे एंड मार्केट प्राइस व्हाट इट शुड बी, राइट? So this is how you can say product की pricing क्या करनी है, that also will be able to decide if we have the explicit cost with us. Okay. Example one is again I have written so that more concept clarity you can get over here. A pharmaceutical company in Hyderabad paying salaries to chemists, rent for factory premises, and electricity charges to the discom is incurring explicit cost. सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या कंपनी चलाने के पीछे जो बेसिक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है या एक्सपेंसेस है वो किए हैं कंपनी ने। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है हैदराबाद में, वो सैलरी केमिस्ट को देती है, फैक्ट्री जो प्रीमाइस ली है उसको रेंट भी पे करती है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी वो देती है। तो ये सारे बेटा जितने भी एक्सपेंसेस है, all these expenses are considered under explicit cost. Okay. Now, second type is implicit cost. Implicit cost refers to the opportunity cost of self-owned resources, यानी खुद से use किए हुए resources used in production for which no actual payment is made. Means, though no cash payment occurs, implicit costs are real economic sacrifices. Ignoring them may give a false picture of profitability. These costs are not shown in accounting records but are crucial in economic analysis. Basically, here also we are trying to understand the concept of cost, but here the type is different. Implicit cost. Implicit cost is such cost in which we are not actually paying up the money. But here, though the cash payment is zero, but these are certain costs which are real economic sacrifices. Real economic sacrifices means, say for example, you must be having understanding about a certain cost uh, about which you are not mentioning it in the books of accounts, but they are crucial and you will have to undertake them. We can take example of fatigue, boredom, anxiety that happens to laborers quite often. Say, for example, some workers are working at your firm and they have a heavy headache or pain or body ache in their body. Then what will you do? Will you actually pressurize them to do the work? No. What you will do? You will have to sacrifice, real economic sacrifice. You will have to sacrifice that particular duration of time because you do know that on the rest of the days, that particular employee or workers has definitely given you more output, more services. So some days are like that and you'll have to bear them. So those are certain costs which are not having any actual cash payment, but those are the sacrifices that you as an owner of the company will have to bear. Okay. So those are explicit costs. Economic cost will be explicit plus implicit cost. Okay. Then, why is it important in calculating economic profit? It is crucial for longer term decisions. It guides the entrepreneurs whether to continue or exit the business organization. Few of the examples I have written so that you can come to know. If a CA, chartered accountant, runs her own coaching institution, instead of taking a 12 lakh annual job, the foregone salary is an implicit cost. Now listen very carefully. What do I mean by implicit cost? Here, wonderful example I have given up. If the chartered accountant is running his own coaching institution, his or her own coaching institution, that is private tuitions he or she is doing, and instead of doing job, where if he or she has done job, then he might be getting 12 lakhs per annum, but he is not or she is not getting it. And apart from that, instead of that, what he or she has opted, he or she has opened up his or her own clinic. So now what has happened? His or her own institution. So the foregone salary is an implicit cost.
you can come to know that it is much more similar to opportunity cost. Not 100%, but much more, a bit similar to opportunity cost. If a shop owner uses his own building for business, the rent he would have earned by leasing out will be an explicit cost. कहने का मतलब है कोई एक बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग आपने खुद ने बनाया है और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो खुद का बिजनेस के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, वही बिल्डिंग आपने रेंट पे दी होती तो पैसा आता, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी और खुद की बिल्डिंग बना के खुद ही आप यूज कर रहे हो। ऐसे ही घर में भी होता है, खुद का घर बना के खुद यूज कर रहे हो, या तो फिर वही घर को आपने रेंट पे दिया होता तो ज्यादा पैसे आते। तो द कॉस्ट दैट यू हैव फॉरगॉन एंड द वन दैट यू हैव चोजन, ये कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट पता चल जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट जो चोजन वन है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द फॉरगॉन वन है, फॉरगॉन वन है, द वन दैट यू हैव फॉरगॉन एंड द ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव लेफ्ट ऑफ, that is opportunity cost. Let's just study so that you will come to know. Opportunity cost is the value of next best alternative forgone while making a choice. Resources already are scarce, and hence choosing one best option means sacrificing another. Opportunity cost is the foundation of economic decision making and applies to individual or simple person, firms or companies, and even to government. Now listen. Opportunity cost is the next best alternative that is foregone by you. What does it mean? Let's just give me one example. Let's just give you an example. You are having this much piece of land with you. Okay, this much piece of land you are having with you. Here, you have two options. As a farmer, you have two options. First option is if you will grow wheat, then you will get 5 lakhs from the market. If you will grow rice, you will get 2 lakhs from the market. Now, which is the option that you will definitely go for? 100%. As a farmer, you are aiming for more profit, so you will grow the wheat. And as the staple diet is wheat in your region, and the weather condition and land fertility is also suiting this, you will definitely opt for this rather than this one. So the cost of foregone, how much you have foregone, how much price you have foregone or let go, 2 lakh rupees. So the cost of foregone is the cost of achieved or opportunity that you have grabbed. So 5 lakh is the opportunity that you have grabbed, and 2 lakh is the alternative that you have forgot. Understood? So now you have taken the decision that on this piece of land you will be growing wheat, not the rice. So this is the opportunity cost. I hope it is understood to you. Now let's just see its importance. Opportunity cost helps in resource allocation. What sort of resources need to be allocated? Proper distribution is helpful for you to get decided if you have opportunity cost with you. This cost avoids inefficient choices. आपको later regret नहीं होगा. And it is used in cost benefit analysis also. Understood? Say, for example, government using land for highway instead of agriculture implies loss of agriculture output as opportunity cost. Here, what government has chosen? Government is making use of the available land for making highway or flyover, and it is making convenient for the public for the traveling purpose. But what it has forgone, what it has not chosen, the land which could be used for agriculture purpose, it is the opportunity cost, the cost which it has already, the alternative which it has forgone. So that is the opportunity cost. Understood this much? Then fixed cost. What do we mean by fixed cost? As my dear friends, the name itself suggests you it is fixed in nature. What do we mean by fixed cost? What is fixed? The term fixed means फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है लॉन्गर रन के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए।
ऐसे खर्चे या ऐसे कॉस्ट जो कि एक बार आपने इनकर कर लिए, once you have incurred, it is going to give you fruitful results for longer time period. So every single time or every single day, you don't have to incur such cost. But once you have done, it is going to benefit you for longer time period. Say, for example, you want to open up a company and you want to buy land. So land cost of 5 crore rupees. So 5 crores is your the cost behind the land, and every single day you are not going to buy the land of 5 crores, right? So once you have invested, it is going to help you a lot for the rest of the years. So this is fixed cost. Another example I would like to give, that is plant and heavy machinery. If you want to open up your business, you will need to have machineries. And say for example, it costs 10 lakhs. Now, every single day you cannot incur 10 lakh of rupees. So once you have bought the machinery, you are going to make this use for longer period of time. So this is your fixed cost. Sorry for the bad handwriting. Then furniture and fixtures. Say for example, in your entire company, whatever furniture and fixtures you have installed, it amounted to rupees 50 lakhs. Every single day you cannot incur 50 lakhs. So this is your fixed cost. Understood this much? So basically, in regular sense, if we have to speak, then we can say the cost incurred upon the fixed assets, then we can term it as fixed cost. And it is for longer run. And if we are talking about the short run time period, then fixed cost is also available in the short run time period, but the nature of those costs are fixed. That means by and how, or you can say somehow you will have to pay off that cost. Otherwise, you cannot run up your business. So for shorter time period, certain costs are there which are fixed in nature, and we have to study that. So for shorter term period, certain costs are that are fixed in nature, and for longer time period, the fixed assets costs are called as fixed costs. Understood this much? So let's just go through the shorter time period fixed cost. You can see on the screen. Fixed costs, fixed costs are those costs. I hope it is visible to you. Fixed costs are those costs. Just give me 1 minute so that it could be easy for yourself to understand in the blank space rather than everything is been written over here. So let me remove this. Then it will be more clear to you, right? Okay, getting back to study. Fixed costs. Fixed costs are those costs which remain constant regardless of the level of output in the shorter run, which means whether the production is zero, whether you are not producing anything, whether you are producing one pen, two pen, three pen, four pen, five pen. Say, for example, your company is making pen. If you are not making any pen or the production is zero, then also say, for example, 1 lakh rupees you have incurred, whether it's for uh, the land, or you can say for lab, for anything, furniture and fixture, for machinery, overall cost you have got is 1 lakh. So एक बार खर्चा आपने फिक्स कॉस्ट के पीछे कर दिया, 200 कर दिया, अब आप कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ बनाओ या ना बनाओ, पर आपने वो खर्चा कर दिया, that has actually incurred. Even if you are making one pen, the cost is going to be same every day. थोड़ी ना हम प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, चीजें बनाना चेंज कर सकते हैं, पर ये फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना हर रोज 1-1 लाख का पे करेंगे या 1 करोड़ का पे करेंगे. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर एग्जांपल आपका फिक्स कॉस्ट आया 10 करोड़. ये 10 करोड़ क्या है? तो लैंड ले ली आपने, फर्नीचर फिक्सचर्स हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गया. ये सबका टोटल अमाउंट जो है वो होता है सपोज 10 करोड़. तो कुछ बनाओ या ना बनाओ भाई, मशीनरी ले आए हो अपनी कंपनी में, सो 10 करोड़ एक बार इन्वेस्ट कर दिए. चलो आज एक पेन बनाई तो भी 10 करोड़ रहेंगे, दो पेन बनाई तो भी 10 करोड़, तीन पेन बनाई तो भी एक ही अमाउंट रहेगी,
4-5 पेन, जितनी भी पेन चाहे आप बनाओ, 100 क्यों ना बना लो, बट इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन करोगे, पर ये तो फिक्स कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी. दैट इज वाई द नेम फिक्स्ड. अंडरस्टूड? So here it is written, fixed costs are those costs which remain constant regardless of the level of output in the short run. Long run में ये change हो जाएगी because the factors of production will get changed. But shorter run में ये fix रहती है, no matter whether the production is increasing or decreased by you. Now understand this. Fixed costs do not change with the production level. Even if output is zero, that means production has been done or even it is zero, fixed cost must be paid or it will remain same. This cost arise due to fixed factors of production, that is fixed assets. Understood? Fixed factors of production. How many factors of production are there, my dear? 4 factors of production. Land, labor, capital, entrepreneur. Now, land is fixed factor. Labor is variable factor. So land if you have purchased, then definitely it is fixed factors of production, my dear. And if you have incurred some amount behind that, then it will be considered under fixed cost concept. Understood? I hope it is understood to you so that we can move forward with the same topic in a detailed way. So, if I'll ask you that whether the production is 0, 1, 2, or even 100, then what will be the fixed cost? Then the answer will be yes, right. The fixed cost will be same. That is 10 crores. For example, that the amount that we have taken earlier. Understood? Now, what is the formula of fixed cost? The formula of fixed cost is total cost minus variable cost. So, my dear students, a question will pop up in your mind that what is the total cost and variable cost? So one after another, we will study that also after this particular cost concept. So fixed cost, I hope it is understood to you. Whether production is zero, increasing or decreasing, fixed cost is going to remain same in the shorter run. Characteristics देख लेते हैं. Fixed costs exist only in the short run because in the longer run, all cost gets changed or becomes variable. Understood? सारे टाइप के कॉस्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. क्यों चेंज हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए तो आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे लॉन्ग रन में, बट शॉर्ट रन में वैसे के वैसे ही रहेंगे. ठीक है? फिर फिक्स कॉस्ट है वो अवॉइड नहीं कर सकते. जमीन के बिना आप काम चला पाओगे? रोड पे अपनी कंपनी खोलोगे? नहीं ना. प्लांट मशीनरी के बिना ऐसे ही बन जाएगी चीजें? नहीं बनेगी ना. तो ये तो अवॉइड ही नहीं कर सकते. दैट इज वाई इट इज फिक्स्ड एंड इट इज अनअवॉइडेबल. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट. उसका कोई लेना देना नहीं है. कुछ चीजें बनाओ ना बनाओ, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, पर एक बार इनकर करनी है की तो वो कर ही दी. दैट इज इंडिपेंडेंट. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजें बने या ना बने. ठीक है? ऐसी कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जाम्पल है रेंट ऑफ अ गारमेंट फैक्ट्री इन तिरुपुर remains the in Tirupura remains the same whether it produces 1000 or 5000 shirt. रेंट पे करना है कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही है. आप चाहे उसमें 1000 चीजें फैक्ट्री में बनाओ, 5000 बनाओ या बनाओ ही नहीं. ठीक है? तो ये कुछ शॉर्ट रन की जो फिक्स कॉस्ट है जो आपको भरनी होती है या इंकर करनी होती है. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, सी ओवर हियर. परचेज कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री सपोज 10 करोड़ की लैंड है तो भाई लेनी तो पड़ेगी. आपका उतना ही कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस चाहिए है या फिर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है. आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है और आपको बड़े पैमाने पर अगर ऐसी कंपनी खोलनी है तो लैंड तो चाहिए रहेगा. तो जो भी परचेज कॉस्ट है वो आपका फिक्स कॉस्ट हो गया. फिर इंश्योरेंस आपने लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लिया है या इंश्योरेंस लिया है तो वो फिक्स आपको पे उसके प्रीमियम करना ही पड़ता है. दैट इज फिक्स कॉस्ट.
सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ मेंबर, परमानेंट कर दिए हैं उनको, तो फिक्स आपको पे उनको करना ही है हर मंथ के एंड में या हर साल के एंड में, बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट दैट यू हैव डन विथ योर एम्प्लॉय। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज, जो मशीनरी रहती है या इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो उसके ऊपर यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज आप एवरी क्वार्टरली या मंथ, क्वार्टरली या ईयरली आप जो भी डिडक्ट करते हो, आपकी जो मेथड रहती है, तो उसे भी फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। रिपेयर, डेप्रिसिएशन इन अ वे कि एक ऐसा खर्चा है जो कि हम मशीन या ऐसा यूज करते हैं, तो उसके यूज करने के पीछे उसकी यूटिलिटी जो कम हुई है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। हर असेट जो मशीनरी जैसा है उसकी डेप्रिसिएशन लगती है। आपकी कार हो गई, तो आप कार चलाते हो तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है। आई होप you know the term what do we mean by depreciation, so we will not go that much in detail. Another example I have written, a sugar mill has to pay interest on machinery even during off season when production is zero. पता चल गया, मशीनरी खरीदी है, इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, तो फिर भाई वो ऑफ सीजन हो, प्रोडक्शन करो या ना करो, शुगर मिल वाले ने मशीनरी ली है लोन पे, तो भाई इंटरेस्ट पे आपको करना ही पड़ेगा। सो दिस आर सर्टेन फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल्स। अब most important thing, let's just go through the schedule and diagram of fixed cost. See over here, I hope it is visible to you. The schedule shows output in units. यहाँ पे output मतलब production, और यहाँ पे total fixed cost जो पैसे में, इंडियन करेंसी का नाम है rupees, that's why I have written rupees. Output देखो जीरो है, तो आपने कितने खर्चा किया, फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 100 रुपीज आई। 100 रुपीज क्या है, तो सपोज परमानेंस ये 100 लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, पर आपके कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ छोटी रकम लिखी है मैंने 100। सो यहाँ पे अब सुनो समझो, प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं कंपनी में, मशीन लाए, जमीन खरीदी, बिल्डिंग बना दिया, सब कुछ हो गया है, पर बनाना अभी स्टार्ट नहीं किया, चीजें नहीं बनाई है। तो प्रोडक्शन अगर जीरो है तभी भी आपका खर्चा 100 है, क्योंकि एक बार तो आपने वो कर दिया है, वही आप लिख रहे हो। चलो आज 10 पेन बना दी, तो भी फिक्स कॉस्ट तो 100 का 100 ही रहेगा। 20 पेन बनाई तो भी 100 रहेगा। 50 पेन बनाई तो भी 100 ही रहेगा। मतलब ये 100 क्या है, हर रोज थोड़ी ना आप 1 लाख रुपए या 100 रुपए 100 इन अ सेंस 1 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ रुपए हो गए, एवरीडे थोड़ी आप खर्च करोगे, तो वो फिक्स्ड एक बार हो गए सो हो गए। तो प्रोडक्शन करो या ना करो, जीरो रखो, 10 करो, 20 करो, 30, 40 या 50 पे जाने दो, या 50, 30 या 10 पे आ जाए, पर ये बेटा फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी एवरी सिंगल टाइम इन द शॉर्टर रन। ओके, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर शॉर्ट रन टाइम पीरियड, प्लीज कीप दैट इन माइंड, इट्स ओनली फॉर शॉर्ट रन। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखो, ये 100 मैंने लिखा है, सॉरी फॉर द visibility of the diagram. I have tried my level best, पर फिर भी if it is not visible then very sorry. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा है। ऑन वाई एक्सिस देखो 25, 50, 75, 100 एंड 125, ये मैंने कुछ मेजरमेंट लिए हैं, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यह हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारा हो गया आउटपुट लेवल या द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन है या जो कुछ भी है। अब डायग्राम के हिसाब से कुछ भी प्रोडक्शन करो, जीरो प्रोडक्शन है, फिर भी आपका कॉस्ट कितना है बेटा, तो 100। 10 पेन बनाई तो कॉस्ट कितना हुआ, 100। 20 पेन बनाई तो कॉस्ट कितना हुआ, 100। 30 पेन, 40 पेन, 50 बनाई, फिर भी कॉस्टिंग कितनी हुई, 100, 100, 100। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। करेक्ट। सो फिक्स कॉस्ट कर्व का इस तरीके का ग्राफ बनता है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये कर्व का नाम दिया गया है TFC, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो या 50 हो, एक एक जैसी ही, या फिर प्रोडक्शन हो ही ना, 0 हो, फिर भी ये कॉस्ट तो सेम ही रहेगी इन द शॉर्ट रन। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। आगे बढ़े। देन वेरिएबल कॉस्ट, important one. The concept of variable cost. Variable costs are those expenses which change directly with the level of output. मतलब पहले हमने फिक्स कॉस्ट का देखा था, 0 पे फिक्स कॉस्ट कैसी थी, सेम थी। पर ये वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है और ये प्रोडक्शन है। यहाँ पे बोला गया है लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज आए वैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। से फॉर एग्जांपल कुछ नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी। एक पेन बनाई तो वेरिएबल कॉस्ट 10 आएगी, सपोज एग्जांपल 10 रुपए आए। दो बनाई तो 20, तीन बनाई तो 30। एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग, या फिर तीन बनाई, दो बनाई, एक बनाई, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है। कैसे, तो समझते हैं। ये कौन से खर्चे हैं जो चीजों के प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते हैं या कम होते हैं? तो ऐसे भी तो कोई खर्चे होंगे या है जो कंपनी वालों को बेयर करने पड़ते हैं। तो वो है ये वाले, देखो। A production increases, look at the screen. As production increases, variable cost also rise or increases and decreases, and variable cost will also decrease, vice versa. These costs are linked with variable factors like labor and raw material. बेटा लेबर जो है, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आपके रॉ मटेरियल्स जो है, आज मैंने 1 किलो मंगवाया, कल 10 किलो मंगवाया, बेस अपॉन द नीड, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। दूसरे एग्जांपल्स दूं। से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने लिखे भी है। रॉ मटेरियल्स हो गया, वेजेस जो आप देते हो कैजुअल वर्कर को, ओवर टाइम कर दिया तो हर रोज के 250 देते हो, पर ओवर टाइम कर दिया तो ऊपर 100 रुपए ज्यादा आपने दे दिए, या जितने घंटे काम किया उसमें दूसरे 250 दे दिए। तो दैट इज वेरिएबल। कल उसने 250 का काम किया था, आज उसने प्लस 350 का काम किया, तो उसको ज्यादा पगार दो, तो वो चेंज हो गया, कॉस्ट आपकी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। फ्यूल या ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोल के चार्जेस, वो सारे वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता चला, और उसका इक्वेशन या फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब समझो, फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मतलब ये दोनों का प्लस, तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आई? यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल दोनों को इकट्ठा करोगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी, और टोटल कॉस्ट में से एक आध माइनस कर दो तो तीसरा वाला मिल जाता है। ठीक है। अब देखो डायग्राम और स्केड्यूल समझ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन, एक चीज बनाओ, दो चीज बनाओ, कितने बना रहे हो, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का स्केड्यूल में दिया है। सपोज आप कुछ नहीं बना रहे हो, आपने जीरो प्रोडक्शन करी है। इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा कैसा रहेगा? 0। 10 पेन बनाई तो 80 रुपीज, 20 पेन बनाई तो 150, 20 से 30, 40, 50 गए, तो आपका खर्चा बढ़ते बढ़ते 390 तक पहुंच गया। अंडरस्टूड? सो अब आप देखो, इससे हम ऐसे रिलेशनशिप को डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। करेक्ट? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है किन दोनों के बीच में? तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो उसका ग्राफ कैसे होगा? यू कुड सी इन द फिगर। जब प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है बेटा। यहाँ पे आउटपुट है यानी प्रोडक्शन है,
यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ली है वाई एक्सिस पे। जब प्रोडक्शन मैंने कुछ किया ही नहीं, जीरो है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही है। यहाँ पे भी यही जीरो ही है और यहाँ पे भी जीरो ही है। जब मैंने मेरा जो यूनिट है प्रोडक्शन का वो 10 बढ़ाया, आज 10 पेन बनाई, तो बढ़ के वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 80, दैट इज पॉइंट ए। सो दिस इज 80। फिर ये क्या है? 150। ये क्या है? 210। दिस वन 290 एंड 390। So the graph is going upside, and this upside is showing positive relationship between total production या output in units and total variable cost. Understood? So every time when you are dealing with the schedule and diagram of total variable cost, then make sure that whenever the output is zero, the variable cost will also be zero. And when this one, and it will start from the point of origin. And as the total production increases, output increases, the variable cost will also increase, and your graph will go upside, your curve will go upside, and this upside will be showing positive relationship between variable cost and production units, output units. ठीक है? Production level. Now, the most important one that I would like to tell you, just give me a moment. A few of the examples I would like to give you so that it will give you more concept clarity in terms of variable cost. Otherwise, what will happen? Simple for the understanding level, you have read the content, but you have actually not understood or got the clarity, then it will be of no use. So let's just take few more examples of variable cost and then we will move forward with the last concept. Now, I hope it is visible to you. The screen is visible to you, so we can go forward. Examples I would like to write it over here. Examples of variable. What do we mean by the term variable, by the way? Variable that means it keeps on changing. So certain cost or certain expenses which keeps on changing on an everyday or usual basis. Now, what are certain expenses? Let me say petrol charges. Say, for example, you are into construction business. You are residing in the state of Maharashtra and you are having or owning construction business. Your construction work is going on in an area of, you can say, Kandivali, and you want raw materials from, you can say, Pune within the same state. But you will have to bear the transportation cost. You will have to give driver the salary, or you can say the wages, or you can say you will have to make payment to the driver. You will have to incur the logistics expenses, correct? You will have to give him the petrol charges. You will have to pay for the raw materials purchase, the one that you are buying from Pune to the Kandivali, right? And so many other such expenses. Say, for example, you will have to pay the electricity bill this time. Say, for example, this month, in the month of December, you have made use of machinery a lot. You have actually produced lots of quantity. That is, you have produced more quantity of output. Then machinery has been used more. So the electricity bill will come and it might be higher than the last month. So this is the variation in your cost. Say for example, in the month of November, it was only 1000 and this time it is 5000. So this variable or changes in the expenses, logistic, petrol charges always gets on the toll, or you can say petrol charges always gets changing every single time. So that also you'll have to incur. And these are certain costs that will be bared by you, needed to be bared by you, and in order to carry out the manufacturing activity.
So these are, my dear, are the variable cost. And if you are summing up all these costs, then it will become total variable cost or a sum total of all variable cost. Understood this much? I hope it's understood to you. And it's a graph and schedule. You can see over here, graph will be moving upwards from left to side upwards. So it is, you can say going upwards in a positive way. So in positive relationship between variable cost and level of output. Yeah, output level. Understood? So how we can say if production is zero, output is zero, then variable cost will be zero. If production increase from 1 to 2, variable cost will increase from 10 to 20 and so on and so forth. Understood this much? Then let's just go ahead with the sixth concept, that is total cost. The sum total of fixed cost plus variable cost is called as total cost. Understood this much? So what will be the equation? Total cost is equal to total fixed cost and total variable cost. Total fixed cost means all the fixed costs that you have summed up. Say, for example, land and building, plant and machinery, plant and machinery, or other such expenses. If you are totaling up all this, then it will be your fixed cost. Sorry for the dog bark. Just give me a moment. Okay. So what is total cost? Total cost is total fixed cost plus total variable cost. So you are totaling up all the fixed costs and variable costs and you will get one amount, that is total cost. Now what is the importance of it? It helps in break-even analysis. It helps to determine the profit level and it is the basis of marginal cost and average cost, which we are going to learn in a shorter time duration. Please note, when the production output is zero, the variable cost will also be zero. So, total cost is equal to fixed cost initially. Understood this much? What is it trying to say? If the production is zero, then variable cost will also be zero. So, look over here. What is total cost? Total cost is equal to total of fixed cost plus total of variable cost. And here what you'll have to note, when the production output is zero, the variable cost will be zero, but fixed cost will be same, right? When production increase from 1 to 2, the variable cost will also increase from 10 to 20, but fixed cost will be same. So this is the important thing that you will have to understand. Now, schedule of total cost. It comprises of, you can see over here, fixed cost and variable cost. Say, for example, output production is zero, then fixed cost is 100 as we have seen earlier. Variable cost will be zero because it has direct relationship. If zero production, then zero variable cost. So total, what cost will be fixed cost plus variable cost. So 100 plus zero, you will get 100. Here, when you are producing 10 pens, so fixed cost is 100, variable cost you have incurred 80, then you will get total cost is 180. This 180 is 100 plus 80 rupees. Here, when you are making 20 pence, fixed cost is same, constant 100, variable cost increased to 150. So overall, you will get sum of value 250. This is 100 fixed cost plus 150 variable cost. So you will get 250. The same way, 30 pence you are producing, fixed cost will be same for shorter run, that is 100 rupees. Variable cost increased to 210. So overall total cost that you have incurred is 310. Understood this much? Which means that if the total production is zero, ये कहना क्या चाहते हैं कि total production अगर zero भी हो जाता है, if the total production is zero, then what will be its effect upon the variable cost? Very good. So what will be its effect upon the variable cost? If total production is zero, variable cost will be zero, but fixed cost you will have to incur, and thereby the total cost will never be zero. It will be exact or equal to fixed cost. That is why I have written that initially total cost is equal to fixed cost. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से कुछ बनाया नहीं तो जीरो है इसीलिए ठीक है अब डायग्राम देख लेते हैं here on y-axis we have cost in rupees cost that is here all the costs are taken fixed cost and variable cost and total cost तीनों के तीनों यहाँ पे लिए हैं इसीलिए स्पेसिफाई नहीं किया है सिंपली लिख दिया है कॉस्ट इन रुपीज ठीक और यहाँ पे है y-axis पे हमारा प्रोडक्शन का यूनिट या आउटपुट का यूनिट अब ग्राफ देखते हैं
जब कुछ नहीं बना रहे, जीरो है, प्रोडक्शन जो है वो जीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देखो, ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, वो भी जीरो है। फिर जब यहाँ पे देखो 10 पेन बनाई तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लिया? 100, सॉरी 80। तो यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पे आप देखो वेरिएबल कॉस्ट कर्व में जब आपने 10 पेन बनाई तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई 80 रुपीज। ये 80, 100 के नीचे है सी पॉइंट, दिख रहा है आपको? ये सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे, ये 80 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिर 150 हुई, मतलब जब 20 पेन बनाई तो ये 20 पेन का आंकड़ा गया 150 पे। फिर 30 पेन बनाई तो 210 पे गया। 30 पेन बनाई तो वेरिएबल कॉस्ट गया ये 210। ऐसे बढ़ता गया, तो ये आपका पॉजिटिव ग्राफ आया, कर्व आया, दैट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जीरो, ठीक है? ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। इतना समझ आया? अब आगे बढ़े। इसी के जैसा दूसरा कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी यही वहां पर हम घूम रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जीरो लेवल है, 100 बनाओ, 20 पेन बनाओ, 30। फिक्स्ड कॉस्ट तो 100 का 100 ही है। तो बेटा 100 कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो जीरो बनाओ फिर भी 100, 10 पेन बनाओ फिर भी 100, 20 पेन बनाओ फिर भी 100, 30, 40, 50, 60, जितने भी पेने बनाओ ये तो सेम ही है। तो इसका एक ग्राफ आता है, दैट इज दिस वन, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। समझ आया? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। इतनी समझ आ गई बात? ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसके साथ साथ उसके कर्व भी कैसे होते हैं वो भी हमने समझ लिया। कैसे समझे आप? तो इट क्लियरली इंडिकेट्स यू, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। 10 पेन बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, ये सेम ही है, ठीक है? 100। और ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये ऊपर की तरफ यानी इंक्रीजिंग दिखाता है, इट गोज अपसाइड, इंक्रीजिंग वे में ऐसे ग्राफ जाता है। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट टोटल कॉस्ट का रहता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय टोटल कॉस्ट? As we have seen just a few seconds ago, total cost is the sum total of variable cost and कौन से cost? Fixed cost, variable and fixed cost। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट मतलब यहाँ पे 100 है, स्टार्ट ही 100 से होता है, जीरो कभी टोटल कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन ना करो बेटा, पर फिक्स कॉस्ट तो इनकर कर दी ना आपने। टोटल कॉस्ट भले ही प्रोडक्शन जीरो हो, पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो 100 है ही, वेरिएबल भले ही जीरो है, तो टोटल कितना आया? 100 तो कर दिया ना, खर्चा तो आपने कर दिया। आपने कंपनी खरीदी है, 10,000 करोड़ आपने यूज कर लिए हैं। अब मशीन ले आए हो, लैंड बनाई है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाया है, 10 करोड़ का खर्चा कर दिया। अब मशीन लाए हो, वो उसके ऊपर काम चालू किया या नहीं किया, लेबर्स लाए या नहीं लाए, मशीन चलाई ही नहीं, पर फिर भी खर्चा कर दिया, सो कर दिया। तो टोटल खर्चा कितना किया? तो वही वो 10 करोड़ वाला। इसीलिए यहाँ पे 100 लिया है वैल्यू, और 100 से टोटल कॉस्ट का स्टार्ट होता है एंड धीरे 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 अप साइड जाता है, पॉजिटिव वे में दिखाता है कि वेन एवर द टोटल यू कैन से टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, ये आउटपुट जितना जितना इंक्रीज हो रहा है, 10 पेन, 20 पेन, 30, 40, 50, 60, वैसे ही आपका जो ये टोटल कॉस्ट कर्व है वो बढ़ रहा है। अंडरस्टूड दिस मच? टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ यू कैन से टोटल कॉस्ट कर्व गोस। देन है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट किसे कहेंगे? तो अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब कि एक इस तरीके की कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो कि खाली एक्सप्लिसिट है और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है, टैक्सेशन में भी हम यूज उसे कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट वो है जो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का टोटल है और डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। तो ये सारे बेसिक कॉस्ट है, पार्ट सेकेंड भी है इसका, वो हम पढ़ेंगे, बट दिस इज सर्टेन कॉस्ट दैट यू हैव टू स्टडी and you have understood, I hope, in the best possible way. I have tried my uh, help to you. Now, thank you so much for listening to me patiently, understanding with me. Do like and subscribe my channel, that is Eco Classes, so that time to time notifications आपको मिलती रहे whenever I'm coming up with such sort of videos. Till the next time, happy reading, stay blessed, and thank you so much.